Uh, okay, what's up? Hello, hello. So let's actually get started. What is gold? Gold has did some weird price action. Like I thought this is supposed to be taken out, but looks like it is moving down lower more, or maybe sweeping off the slow, coming within this 1 hour demand area. This sell to buy price action. Right now we have tested the range, the entire range, but there's looks like there's no strength. Euro USD में the plan is I'm not sure of it. Like we are reacting off a nice area of supply. Maybe यहाँ से bearish हो जाए, है ना? We are at the area जहाँ से previous selling आई थी, and we expected कि ये inefficiency fill होगा. So right now, if prices show conviction कि यहाँ से नीचे जाएगा, तो we'll look for shorts. If price continue to hold bullish, we'll continue to look for longs. यहाँ पे I would love to see this low go for prices to be more aggressive, because in daily we are creating a doji, and if we sweep the liquidity below this low, this will bring aggression in the upward direction जब ये liquidity sweep होगा. Hold, I'm thinking a sweep and then a push up higher, so this would actually be like कुछ ऐसे, like a sweep down lower, and after the order flow shift it will just continue to push up. This is what I'm expecting. Let's see how it goes. BDC USDT. Hey, this is quite bearish. We don't really see this low holding. In weekly, monthly time frame, there's a fair chance prices might come within this area. This is the sell to buy price action. Price can potentially just test that, or we can also see that this range was never tested. So there's a fair chance price can just push down lower. ये बहुत possible तो है यार, इतना नीचे गिरना, but let's see. I'm not sure, but immediately we are expecting at least this black line to be tested, and in fact, like smaller time frame also, order flow looks like it's quite bearish and it's not really well holding. So there's a fair chance हमें यहाँ से नीचे की तरफ कुछ देखने मिले, and US 100 is looking quite aggressive. Yesterday I entered shorts, need some money here and there. I entered short after this hunt. Yeah, after this sweep, when it start pushing downward, somewhere around this area I've entered and booked somewhere around this. I was expecting even more, but then after that I left the screen, because here it was liquidity, it was good, but price failed to do that. So now what I'm expecting is price to continue to push up higher, because in daily time frame you can see it's holding quite bullish, and this is the liquidity level that is supposed to be taken out now. यहाँ पे भी this is all liquidity, so there's a fair chance we can potentially see the highs getting run, and what? Nothing. Let's just wait for it to come to the discounted area, and then we'll plan longs from something within this. We'll see how it builds up in New York session, but इसमें gold में I will like to wait. Good afternoon, good afternoon. So we do have some nice liquidity available, so we'll just plan something around it. Let's see how it goes. Do we have any news event today? No, we don't. It's all low phone. Okay. Ideally tomorrow should be CPI, but पता नहीं. If government reopens, then होगा. Yeah, mostly during session time frames it happens, but ऐसे वो भी certain नहीं है यार. उसमें भी sometimes prices just end up moving. जो entire move है वो Asian session में, and
लंदन न्यूयॉर्क में डोंट रियली मूव और डू एनीथिंग मच. सो उसमें कभी कभी एशियन सेशन वर्क्स रियली वेल, बट कभी कभी and the most consistent thing that we can see is your New York session, the main volatile session. So जिसमें ज़्यादा probability है trade hit होने की, we will stick to that. So I think as the reason we should consider just trading New York rather than entering every time everywhere. Thinking that this can go, so let's just see. I'm not really betting on shorts. Instead, I would like to just wait and enter longs once price reach within this area. अभी फिलहाल के लिए तो बायस वो है, बाकी देखते हैं. यूरो can fly as well as euro can fall. We do have some nice liquidity available here. So we need to see if the order flow breaks and if it continue to hold bullish. That's when we can target these highs. So right now in higher time frame, I see things as like to be uncertain. I'm not really sure because big भी है यहाँ भी है, big यहाँ पे भी है, like it's in a very bad mess. Or we would have continued to look for short यहाँ पे. Then यहाँ से we have planned long, but now we are at a resistance level or supply जहाँ से fall भी आ सकता है. So I'm not really interested until and unless it turn around something or it takes out the initial reaction from the supply area. So once the initial reaction gets taken out, then we can continue to look for longs and expect these liquidity will be taken out. So I'll place alert here and at the low. Otherwise in this range I would not really like to take any trades. It will be a low probability one for me. It can work out now as well, like it can just continue to push up, but I'm not really very sure about it. होल्ड में वेट करेंगे, तो हर जगह अभी वेट ही करेंगे. वी डोंट रियली हैव एनीथिंग क्लियर एट द मोमेंट, सो वी वुड लव टू और आई वुड लव टू वेट. लेट्स सी. Just hang around. Okay, so let's see, we are seeing some rejection coming in.
नॉट इंडिया। इंडिया ने अपनी आर्म फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, ताकि इफ पाकिस्तान ट्राइज टू एक्ट नॉटी, ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टेप्स शॉर्टली आफ्टर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल was made chief of the defense staff, एंड पाकिस्तान में एक जनरल पैटर्न देखा गया है पिछले 70 से 75 साल में कि जब जब उनके किसी आर्मी जन को एक्सटेंशन मिली है, जब वो रिसेंटली आया है, तो इन्होंने कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ करने की कोशिश करी है। वेल बिकॉज वहां की आर्मी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस इंटरप्राइज है और उनका ब्रेड एंड बटर है इंडिया के साथ fear। This is how I eat healthy. This is how I eat. Okay, let's talk about paid ads. It has been one of the challenging client acquisition methods for me because I've not had success. But I've had good leads come from there, but it was expensive, having not the success that I wanted. Okay, so there's a fair chance कि यहाँ से भी built up हो और we can see prices going up higher. Let's see how prices move next. But we have swept some internal range liquidity. Tick on, tick on, tick on, tick on. हो जा connect जल्दी. Once this high go, fair chance that these all liquidity levels will be taken out. So be ready to plan your trades accordingly. What is this? वेट करेंगे, बट यहाँ से भी लॉन्ग्स का trade बन सकता है because we do have a lot of liquidity available up here. We all know that the trend is quite bullish. We all know the targeted area is this. We all know that it's holding quite well for a reason, for it to push up higher. We can also see that in 1s time frame it has swept the internal range liquidity. So it's quite possible that we can actually see prices pushing up higher after this. So just be ready to enter longs. And in fact, like you can enter with like 70, 65, 70 pips stop loss at the moment, high risk, targeting close to 300 pips. 300 pips wala move. In fact, like 350, 400 pips to easy. Actually, yeah, 400 pips from the current trading price. We'll just wait for slightly more confirmation and then we will jump. In fact, like if you want to put your first position in very small, you can do it now as well. And like if you want, you can enter with small position. And if you want to wait, that is also cool. I think this range low will get tested. And if this range low get tested, oh bancho, bancho. Like entry लेनी चाहिए.
on. This liquidity sweep has given us the confirmation that there is a chance. Now, this aggression has given us even more confirmation that it has to push up higher. Now, the next step would be us to wait for a higher push. These all liquidity levels are support. The heck is wrong with this? VPN disconnect. Connect. If anyone have entered, man, like it's like zero drawdown entry straight towards 60, 70 pips. What? Right. सुबह मुझे शौचालय जाना पड़ा, हवाई जहाज में बैठा, जैसे एयरपोर्ट पे उतरा और गाड़ी में बैठा, मुझे लगा कि चलो पहुंचेंगे तो जाएंगे। मेरे को बहुत प्रेशर है, मैं राह ही देख रहा था कि कब आता सावन। सावन पर यार मैंने वो सलामी सैल्यूट पुलिस वाले तो मेरा ध्यान कहीं नहीं, कब लेफ्टिनेंट जाता हूँ उतने में मैंने सलामी लेके ट्रेन पकड़ी हुई है। मैं गया लेफ्टिनेंट में, अब नीचे बैठ गया तो जो प्लास्टिक के ऊपर रखती ना रखती हूँ, उसको ऑयल पे मैं चिपक गया इसमें। इतनी मुझे तकलीफ हुई है उठने में, मेरे बाल निचोड़ मैं तो पहले अगर कोई अधिकारी आता तो मारता उसको, इतना मुझे आपको बहुत वेदना हुई। तो भी मैं शांत रहा, मैं 2-4 मिनट बड़े मुश्किल से उठने के बाद फिर मैं बाहर आया। आने के बाद मैंने सेक्रेटरी को किस्सा बताया, तो कैसे लोग बोलते हैं वो नहीं आता है, तो प्लास्टिक का लाइसेंस लगा कैसे लगाए, कोई डिप्टी इंजीनियर को बोला, तो तू क्या करते हो, कितना है, ये हुआ कि डुप्लीकेट डिग्री है, बोले मैं आया नहीं 500 मेरा तो कल नहीं प्लास्टिक पे मारा। बोले, आपने बताया कि साफ बहुत स्ट्रिक्ट है, सब जगह पेट लगा तो जाओ अटैक करो। हाँ, किसी ने वैसे एंट्री ली जब मैंने यहाँ भाई यहाँ बोला था, अगर अगर छोटा पोजीशन डालना है तो डाल, मैंने नहीं ली। और तुमने ली तो बताओ भाई। ये भाई जीरो ड्रॉडाउन एंट्री की तरह भाई बस उड़े जा रहा है, और ये जाएगा 400 पिप। अब 400 पिप जाएगा ये।
हाँ वैन सो भाग तो गया है ये. Let's wait. Let's see. See, it has to go up. Let's see what next. Let's wait. Just give me a minute. Let's see if it retraces, boys. We are entering. We have a fucking like solid liquidity here. And so आ जाए नीचे भाई.
हाँ भाई चैट देखो ना चैट। नहीं चैट देखो मैं लाइव स्ट्रीम में। हाँ हाँ लॉन्ग्स में देख रहा हूँ। आप भी देख लो। नहीं भाई ऊपर जाएगा ये लॉन्ग स्लो। शॉर्ट्स क्या है, शॉर्ट की पोजीशन कैंसिल करो। शॉर्ट मत लो, हाँ लॉन्ग स्लो। हाँ, नहीं नहीं वो तो लिक्विडिटी है, अभी यहाँ से 400 पे ऊपर जाएगा 4160 तक। तो वहाँ तक तो बहुत क्लियर टारगेट है। 4160 डॉलर मार्क है ना उधर तक। हाँ तो उधर तक वो लिक्विडिटी है, वो तो जाएगा ही जाएगा, तो लॉन्ग्स पे स्विच करो। हाँ चलो। हाँ 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 मैं भी लॉन्ग्स बनाने का सोच रहा हूँ 120 के आसपास। हाँ वही उसके आसपास, बट भेंडी आएगा नहीं साला, ऐसे ही भाग जाएगा। हाँ वही बहुत एग्रेसिव है, देखते हैं। चलो हाँ। Because small quantity at 27, I mean like it's good. If it just continue to hold quite aggressive, definitely it can push up higher. लेकिन स्ट्रक्चरली हम चाहेंगे नीचे आए, लेकिन ये अगर देखो मैं यहाँ पे एंट्री करूँ ना तो मेरा बस यही टारगेट हो, क्योंकि उसके बाद जब ये लिक्विडिटी हंट होगा प्राइस नीचे भी तो डीप रिट्रेसमेंट भी तो ले सकता है। या तो मैं बस मैं लाइक स्टॉप लॉस ट्रेल करके छोड़ दूँ। इफ़ वी एंटर लॉन्ग्स हियर keeping the immediate low as a stop loss and this as our target, still it's like 1 as to 2.5 risk reward वाला trade, बट ये लूंगा नहीं है। बिकॉज यार ये रेंज हाई टेस्टेड नहीं है, तो मेरे को चाहिए कि रेंज मतलब मिस हो जाएगा चलेगा, बट रेंज हाई जब टेस्ट होगा ना, दैट्स व्हेन द फन बिगिंस। अभी नहीं लेते हैं, अभी तो चलती गाड़ी में चढ़ने जैसा है बस, मैं जो थोड़ा सा रिट्रेस करे ऊपर ही जाएगा ये भाई, ऊपर ही जाएगा। I am currently seeing two probabilities. Like, just give me a minute, I'll quickly update those. I'm seeing this as a liquidity level, so there's a fair chance if prices hold very aggressively, just slight retracement, and then a continuation. If prices are like quite aggressively bearish, then from this area. But my bias is overall bullish only, and I'll be betting on longs only. थोड़ा जा रहा ऊपर भाई। एक सस्ती मस्ती ट्रेड तो बन सकता है यहाँ से, ठीक है। दैट वुड बी गैम्बलिंग, बट अगर किसी ने यहाँ पे एंटर किया तो ये अपना टीपी है ज्योति, this can work. I'm not in this. I would really love to see prices retrace, come around 20 area, 420, and then look for longs. I'm not in any of the trade. I do have this as a very clear liquidity. I do have these as a very clear liquidity levels. I'm quite confident about this that it will push up higher. It's just that I need some extra layer of conviction and a discounted area for entry. बाकी तो सब चंगा है भाई।
भाई मैंने बाय बुक कर दी बिकॉज सेल हो सकता है। क्यों होगा भाई सेल? भाई बुलिश है ये दिख नहीं रहा तुम्हें? ये देखो भाई, देखो ये जाएगा ही जाएगा, नहीं होगा सेल, लिख के लो। और सेल होता भी है तो भाई यहाँ से बाउंस करेगा वापस, मैं बोल रहा हूँ भाई, आएगा ऊपर ही जाएगा भाई। मैं वो भाई जिसने ने यहाँ से मस्ती मस्ती वाली एंट्री ली होगी, मस्ती मस्ती में $70, सॉरी 70 पिप्स मिल सकते हैं। मैंने नहीं ली भाई, मैंने नहीं ली। 4180, my target is 4160, I'm not really sure of 4180. 4180, yeah, is this range low, right? It's quite possible, but my target is just the liquidity level, that is this. उसके बाद तो भाई वो बहुत ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। ए वैन का लौड़ा, वैन शुद्ध रिट्रेस नहीं किया माँ की शुद्ध वैन। ज्योति भाई आपका टारगेट हिट होने वाला है भाई, मोटा पैसा बनेगा भाई। यही गोल्ड का ये है भाई सीन। मैं वेट करूंगा। हम्म। Boys, we are actually seeing prices coming down lower. Let's see if we happen to get any entry. And around this area, I'm planning to enter, okay? So I will just see what my stop loss, भाई 100 पिप तो मैं कुछ भी हो, मेरा स्टॉप लॉस नहीं रख रहा। अगर यहाँ पे आए तो सही, और यहाँ से ही ऑर्डर फ्लो बनाने लग जाए तो अलॉन्ग द वे आई विल प्लान द एंट्री, ओके? ऑलराइट, सो
Let's see, this range high is what we are expecting to be tested. ये रेंज रहा है, अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेस्ट करने का. बीडीसी, पीटीसी, बीटीसी यूएसडीटी ना. एक मिनट मेरे भाई, $1 का एसएल हिट होने वाला है भाई. सही है भाई. $1 क्या रिस्क मैनेजमेंट है भाई. लिमिट यहाँ लगाता हूँ, स्टॉप लॉस. क्रेजी. से लेके 400 पे. भाई अभी भी आई डोंट सी दिस लो एज अ वेरी सॉलिड वन. दिस लो इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज अभी भी मैं यहाँ पे इनएफिशिएंसी देख रहा हूँ. सो एंड इनफैक्ट दिस प्रीवियस रेंज हाई इज नॉट रियली टेस्टेड. सो there's a fair chance कि हमें यहाँ से सेलिंग देखने मिले. Price can just dip down lower within the demand area. The best area where I would love to enter longs from would be this. But मेरे को पता है प्राइजेस वहाँ नहीं आएगा. तो the best possible case would be around like 22 के आसपास हम देखेंगे. What platform you use to trade forex? I use multiple brokers, bro, but the one that you, if you want to use, would be Valtex, and the link for that would be updated in a while if you hang around. And the perks of you registering through my referral link is you will getting exclusive access to the group, the inner circle, where you can ask questions and update doubts, and like that sort of a community of like-minded people, and the experienced one, of course, who are definitely more experienced than you. भाई अगर यहाँ से ऊपर गया ना, so writing to with regards that your claim request for the insured mention in case of the following documents will be were received on 12/11. अच्छा मतलब hours. Received originals. In case of any clarification, kindly contact our customer care number shown below. पैसा आएगा अभी, पैसा आएगा. Bro, it's like 1:2000, but ideally I would say you should stick to 1:100, or max to max 1:500. But they do offer more as well. बाकी आपके स्किल्स पे है भाई. $10 को कैसे $1000. Never fall for that. All I'm saying is confidence. Dave, I will be seeing your message. Just hang around. तो के बता शेख but no, while trading forex you need that amount of leverage, bro. At least 1:100 is what. If you're trading crypto, that's a different story. But
Yeah, you can just check. I have updated the link. You can just go through the following process, and I'll definitely let you in. Sure, mate. And once you update and like deposit, just send me the screenshot, and I will be helping you with the group link, the exclusive one. Possible goal retracing till, bro, goal retracing till what area? 4098. 4098 भाई, भाई देख के कैसे, मतलब कैसे अनएक्सपेक्टेड ऐसे, नॉट अनएक्सपेक्टेड बट कैसे। अरे शेखावत, भाई मैं अभी गाना गा रहा था तो मैं तो रोक के बता, शेखावत क्रेजी। मैंने आपका नाम नहीं पढ़ा था भाई, बट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां तो डेफिनेटली प्राइस नहीं आ रहा है। भाई बस ये है कि यहाँ से डिप मिल जाए, यहाँ का ही आ जाए, मैं लॉन्ग लेके छोड़ दूंगा भाई। मैं लॉन्ग लेके छोड़ दूंगा बिकॉज आई एम वेरी श्योर दैट इट हैज पोटेंशियल टू पुश अप। एंड कमिंग टू 4098 वाला एरिया, काफ़ी मुश्किल सा है। मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आ सकता है भाई, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मेरा फर्स्ट इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा कि प्राइजेस शुड पुश डाउन लोअर एंड देन फ्रॉम दिस एरिया आई विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग्स। Sir, can I deposit through UPI? Will it be safe? Yeah. Like you can always get back to me if you have any issues related to withdrawals or anything. I'm here to help you out. Or not say, oh, no, no, no. Of course, I'm here to help you out. And that's the reason you would be under my referral, right? And you can deposit through your bank application. UPI भी चल जाता है, but there is a person who can help you with that. So if you have any doubt, just text me on WhatsApp. The link is in the pinned message. So yeah. भाई ये जा रहा है, भाई ये जा रहा है। I texted you. हाँ वही मैंने इसलिए तो आपको बोला कि मैंने मैसेज आपका नहीं देगा अब तक, बट आई कैन सी दैट आपने मैसेज किया है, शिनचैन की डीपी वाला। ये जा रहा है। भाई वर्टेक्स का रिलेशनशिप मैनेजर कॉल किया फ्रॉम हिज एंड फॉर एग्जैक्टली, he is very supportive, and of course like if you have any issues, just make sure you take my name and he will be helping you out. I texted you. How, for how long have you been trading? Close to 6, slightly over 6, but close to 6 we can say. Yeah, man. Oh, 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 looks like we missed a very good trade. Not very good, like, but a good one. I was expecting a drop, but fucker didn't retrace at all. No, no, I'm not. I'm just like randomly, just exploring things. So why not to explore in public?
भैया कोर्स है आपका कोई कहाँ से स्ट्रैटेजी सीखना है? कोर्स ऐसे नहीं है अभी फिलहाल कुछ भी, but I will, like, once I reach around 400 subscribers, I will definitely plan to update things on YouTube, how I trade and how I look at the charts. So yeah, and Sri, more than profitable, bro. Like, even if you just copy my trades with proper risk management, of course, you yourself will notice if I'm profitable or not. Oh yeah, BTC, right? भाई BTC मैंने वैसे I am quite bearish on BTC. I'm quite bearish on BTC, so let's see. Is that a no? Of course not. It's a yes. It's a big fat yes. बाकी तो तुम्हें जो समझना है समझ लो यार. Like if you attend the stream on daily basis, you will yourself realize. बाकी मैं और कुछ नहीं explain करूंगा. बाकी तुम्हें लगता है नहीं हूँ प्रॉफिटेबल, इट्स फाइन. नहीं हूँ भाई, मैं तुम्हारे लिए सिंपल. बाकी तुम कंसिस्टेंटली अटेंड कर लेना, तो फिर आ जाएगा कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस की भाई अगला है भाई जोरदार. All I'm saying, let's give love a chance. Ganu, एक मिनट. I will just like discuss that in detail. Just give me a minute. So, BTC USDT ना, BTC USDT मध्ये if we see, wait, I just randomly found your stream. Probably will never meet again. I've been trading for 5 years now, on and off, and I'm not taking hopefully profitable soon. I trade US markets on. Okay, bro. Even we trade US markets. If you just refer a few other sections of the live or a few other videos of live, and like if you don't know me, and if you have never seen me, I'm pretty sure somewhere, like if you are in the industry from last 5 years, you should have seen our ads. Moneyball trading.
So I was a part and senior mentor over there, and we have trained a lot of people during that time. And from last 2.5, 3 years, 3.5, 4 years, close to that time, uh, I am not really selling anything directly. I'm not really trying to push force or anything of that sort. Just trading by my own. And in last 2 months, I started trading live back again. Because back then we used to trade live. So uh, back then we used to trade live, and when no one was doing it. So of course. So yes. Hello. Hello. हाँ. well, हेलो हेलो. सेशन में हो, सेशन में हो. हाँ हाँ. So yeah, although the only way you can see me back is you can join one other group that we have, uh, where you can get updates related to stream and the trades as well. The link for that I will be updating in a moment. So that way you will be in a constant touch, and then I will be having confidence that you will be seeing me on almost daily basis. So yeah, you can click on the above link I have updated and help yourself. But how do you guys trade US from India? Is it legal? Just curious. I'm living. Uh, See, I personally trade a prop account. My orders directly go in US markets. So for me, that is the way. The next possible way is to trade with futures firm. I hope you are aware of future firms. So you can trade in US futures through brokers like Apex, Tradeify, Take Profit, then all of the firm out there. My funded future, then what else? These are the firms that you can definitely. Lucid is one of the good one. These are the firms how exactly you can trade US markets in futures, of course. So those who are new, you can just definitely click on the link and join. Yes, bro. भाई ये होल्ड कर रहा है सॉलिड बुलिश, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे गिरे, है ना. ये सप्लाई है, यहाँ से थोड़ी फेक सेलिंग आए ताकि लोग एक्साइट हो कि अब तो गिरेगा ये, और फिर यहाँ से ऊपर जाए. दैट वुड बी लवली ट्रेड, बट आई एम नॉट श्योर इफ विल गेट इट because prices are holding quite aggressive and bullish over here. I mean, like, it has created a sort of new order flow here, but till the time this high don't really gets taken out, I will not trust this or this low. So I'll be waiting for that. बट मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऐसे ही भाग जाएगा, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये तो हाई ब्रेक कर ही देगा. तो ज्योति, आपने अगर होल्ड कर रखा है तो ग्रेट मैन. लाइक 70-80 पिप्स का टारगेट तुम्हें बहुत इजीली मिलने वाला है अभी. उसके बाद भी काफ़ी ऊपर रूम है अपने पास. सो लेट्स सी. डैम. ओ. थैंक्स करण भाई. Sri, there is a WhatsApp community link in the uh in YouTube bio as well. Please go ahead and help yourself with the link.
7 5 चल दिया भाई, ये ऊपर चल दिया, चल दिया। अब भाई ये हाई ब्रेक करेगा। It will take out that high. It's holding quite bullish. It's gonna go now. अभी मेरे को नहीं लगता ये यहाँ पे आएगा until unless प्राइस यहाँ की लिक्विडिटी हंट करे। बाकी अभी मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है इमीडिएटली यहाँ से एंट्री लेने का। I'm fine with just leaving it as it is, and if it happens to retrace back, I will be planning longs back again. I was a member of Moneyball. A lot of people here were member of Moneyball. Vese, how you discovered Ganu? How you discovered me? Like, were you in the WhatsApp group, or are you in the WhatsApp group? WhatsApp community, I would say. कहते हो हाई रिस्क एंट्री हो जाए। अगर मैं बस चेक कर रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे घुसते हैं, कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस मे बी, टारगेट 1:1 तो कर ही सकते हैं। 1:1 के लिए अगर आप लेना चाहोगे, क्या आप लेना चाहोगे? नहीं, नहीं लेंगे भाई। ये जाएगा ऊपर, बट it's way too up in the premium. Very, like, it's not worth risking this trade. Instead, I would love to enter with a limit order here. If it, see, this has a probability of going up higher, but I don't really want to bet in that direction. I don't really want to bet here when you are way too up in the premium and when the range is not efficient. एक बार ये range efficient होती और ये order flow बनता, मैं घुस जाता। लेकिन अभी I am very skeptical that if it will work, if it will not work. So instead, I would still love to wait at this range high, because this 1H range high is not really tested yet. So I would love to see if it can retrace, और यहाँ पे अपने को ऐसे फेक सेलिंग के लिए यहाँ पे मस्त सा सप्लाई भी है, तो यहाँ से एक फेक सेलिंग हो सकती है। अगर होती है तो यहाँ से भाई अपन पक्का पक्का 101%, अगर मैं चले भी जाऊँ भाई, लिमिट वाले लॉन्ग्स लेंगे। चल, चले मतलब बाहर चले जाऊँ, मैं जाऊँगा तो कहीं नहीं भाई, ये तो उम्र ही क्या है भाई। Yes, let's wait. Let's wait for this area. I would really love to see prices moving up higher from here. Just यहाँ से मेरा पहला
इंटेंशन ये है कि यहाँ से तो जाएगा ये ऊपर। अच्छा अच्छा, मैं हूँ प्यार तेरा, ओ वल्ला। We are like we are getting some rejection from here, but अपन नहीं ध्यान देंगे उस पर। अपना इंटेंशन क्लियर है तो अपन वेट करेंगे थोड़ा, ठीक है। नाउ हैंग अराउंड एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन नेक्स्ट 2 to 3 minutes। आई जस्ट टेक अ पी ब्रेक। बाय, आई विल सी यू। ऐसे थोड़े टाइम बाद आया मैं। नहीं नहीं, तुम स्क्रीन देखते बैठो, आई मीन चार्ट्स देखते बैठो। आई जस्ट म्यूट माई सेल्फ एंड टर्न ऑफ द कैमरा। हैंग अराउंड। I was on mute, I'm sorry। I was saying that this supply can actually act as an area जहाँ से fake selling हो, and when people see this they will get excited to look for shots, and maybe it will just give some move in that direction for about like 30, 40, 50 pips. And around this area, once we start seeing realignment and prices start holding its bullish order flow after a smaller time frame structural shift, we are planning to enter longs. Okay, we are planning to enter longs. Let's see.
Folks, we can see that prices are holding quite bearish from the area we discussed, and thank God we have not entered longs. Sorry, हाँ longs here. अभी यहाँ से मज़ा आएगा बॉय. यहाँ से if it just sort of hold bullish and give some confirmation, we would actually love to enter longs from here. Let's see. भाई पेशेंस गेम है अभी सब. यूरो यूएसडी देखेंगे तो दिस इज आल्सो लाइक मैसिंग अप, fucking around. So let's see how it goes. A German index man, like super bullish, मस्त एग्रेशन दिखाया, लेकिन अपना बायस तो ये है कि भाई ये जाएगा, तो अपन ने उस पर बेट नहीं लिया. लेकिन यहाँ पे भाई अपन बेट लेंगे जब NY ओपन होगा. इफ दिस पीस ऑफ प्राइस retrace to the maybe something within this, there is this inefficiency, price retrace within that, would love to enter longs from these areas. यहाँ पे plan overall now it's bullish and we will bet on these highs to be taken out. So that is a very clear liquidity level that we would expect to go. So let's see how it goes. ठीक है. बाकी यूरो यूएसडी शोइंग साइंस ऑफ बेरिशनेस, इसलिए अपन ने यहाँ पे लॉन्ग्स, मतलब ये डिसीजन पॉइंट है. यहाँ तो यहाँ से या तो मीक और ब्रेक वाला सिचुएशन है कि भाई यहाँ से या तो बेरिश होगी प्राइजेस या तो बुलिश होगी. यहाँ से कंटिन्यूशन बेरिश बेरिश भी आ सकता है, बिकॉज if we check where exactly we are reacting off, so overall we are contained within internal range bearish order flow. We are coming from a premium. You never know, maybe we'll just continue to see prices pushing down lower, and यहाँ से अपना फर्स्ट टारगेट सेलिंग के लिए, सेलिंग की तरफ ये होगा. तो अगर हम ये वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में ये जो विक बनाया, दिस वुड बी आवर target, and for us to continue to enter for shots we want some conviction. Right now the 4H order flow and 1H order flow is holding quite bullish. Once this and this low gets taken out, it confirms that now the next available target and the liquidity level is around here. Then we will be looking to continue to look for shots. And anyways the bias was this only, यहाँ तक लॉन्ग लेंगे उसके बाद वेट करेंगे. तो अभी हमें जिस तरह की प्राइस डेवलपमेंट्स देखने मिल रही है, देयर इज़ अ वेरी फेयर चांस कि हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन सेलिंग की तरफ का प्राइस मूवमेंट देखने मिल सकता है. तो अगर लेट्स से ऐसा कुछ होता है, प्राइजेस यहाँ से बार बार रिएक्ट कर रही है, बट every time it's failing to take out the highs, we would definitely look for shots and like continue to hold those shots. गोल्ड बहन का लौड़ा है, जल्दी चले जाओ भाई नीचे. मेरे को नहीं लग रहा है ये वाले सेशन में अपन को ट्रेड देने का इसका मन है, और बीच में अपन एंट्री लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि भाई लॉजिकली नहीं है बीच में एंट्री लेना. सो विल जस्ट वेट. व्हाट डू यू गाइस से? व्हाट डू यू थिंक अबाउट यू? व्हाटएवर आई सेड, इज इट अलाइनिंग? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? बिकॉज आई नो, बट हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मैं सही बोल रहा हूँ ये मेरे को पता है. कोल्ड भाई, कोल्ड कोल्ड बहन का भाई. ये पकोड़ा बस ऊपर भागे जा रहा है एंडी. ये पकोड़े को कोई रोक लो. ये चल दिया एंडी वापस. कोई नहीं भाई, अभी वेट करेंगे.
ये बस नीचे गिरेगा तो अपन करेंगे कुछ, नहीं तो वी विल कम इन नेक्स्ट सेशन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो ये है। तो बाप रे, किसने किया? मम्मा तुझे अरे भाई, अरे मुझे कौन बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम मेरे को ऑलरेडी नहीं जानती तो मैंने लगभग 4 साल पहले कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, और बहुत ही एमलेसली कंटेंट बना रहा था, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, मेरे को कैमरा के सामने बात भी नहीं करना आता था। ये थोड़े क्लिप से तुम देख सकते हो कि कैसे मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, बात करना नहीं आता था कैमरे के सामने। आई वॉज नॉट बॉर्न विद दिस, लेकिन मैंने 2 साल 3 साल एकदम बिना किसी एम के काम किया, बिना किसी गाइडेंस के काम किया, और मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। एंड टुडे एट द एज ऑफ 21 आई मेक मोर मनी इन मेरी जितनी भी सोशल मीडिया की इनकम है, एक्टिवली नहीं आती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। अब मैं ये सब अचीव कर पाता हूँ सिर्फ 3 चीज़ों से, एक फोन, एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन। दैट इज ऑल आई नीड। मैं दुनिया में कहीं भी हो सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ। इट्स द फ्रीडम दैट आई गेट। लोगों का ये ड्रीम होता है आई 40, बट आई एम ऑलरेडी इन इट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डिजिटल प्रेजेंस, जो आज भी लोगों को नहीं समझ में आता। और मैं तुमसे कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, आई एम स्टिल एट एज ऑफ 21, और शायद तुमसे कुछ चीज़ें होंगी। मैंने ये एग्जैक्टली कैसे किया 1 साल के अंदर, और तुम भी कैसे कर सकते हो। धन्यवाद।
भाई अभी अपन को मिल कुछ नहीं रहा, तो अपन शाम को मिले। व्हाट से बॉयज? The plan still remains the same. If it retraced to this area, we'll look for longs. Those people who are still live with me, I would really appreciate if you can just let me know if we can just call it a day. और क्या मिलते हैं भाई, मैं नहीं पीता। Okay, perfect. So meanwhile, don't execute any random shitty trade, okay? Because we do have conviction कि भाई ये होल्ड करेगा और यहाँ पे वेट करेंगे एंट्री का, ठीक है? बीच में कोई हगना नहीं। हाँ हाँ, मैं अपडेट कर दूंगा भाई, और मैं आपको अभी रिप्लाई करता हूँ व्हाट्सएप पे। बियर के लिए निकल गया मेरा। सही है भाई, मजे करो, सुरूर में मिलता है फिर। ठीक है, चलो ध्यान रखो। आई सी यू ऑल इन द इवनिंग, एंड इफ आई हैपन टू टेक एनी एंट्री आई विल डेफिनेटली अपडेट। बट मेरा इंटेंशन यही है कि यहाँ से मैं लॉन्ग्स का सोचूं, बिकॉज दिस इज प्योरली लिक्विडिटी भाई, जाएगा ये पक्का। ठीक है, चलो टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।